Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and I'm back with my evening session with a brand new topic. And I just hope there are people over here because I'm 5 to 6 minutes late. So, but anyways, I'll just, quickly go and check on my Facebook page how many of you are live so I can start with my session. And in the meantime, do guess what the topic is about. Okay. So let me just check. Okay, so I can see people coming. And who is this? Where are you signing in from? Are you from Islamabad or Lahore or Karachi or any other place? Wherever you are from, just do let me know so I know. Okay, so I can see myself on Facebook as well, and I can see people watching. So that's great. Okay, Yusuf, hello. I hope you're doing well. Yusuf Khan, now are you the same Yusuf Khan or are you some different Yusuf Khan? Walaikum Assalam, I'm fine, Alhamdulillah. And there was someone who was calling me on Messenger, but I cannot attend their call in the middle of the session. Okay. So, what do you think about this topic, dancing in the rain? Yeah, learn to dance in the rain, something like that. It's a full quote actually, but I haven't, written the whole quote. So many of you would be thinking that it's something Alamdar Appawala. Thank you for joining in and watching. Okay, today is very nice. Yes, the weather is very nice and it's very cold as well. Right now, I'm not wearing my cardigan, so I know it's really cold. But I don't have to worry because I have a small heater which is just switched on nearby me, so I won't be feeling the cold. Otherwise, if I would be sitting without the heater, but definitely then I would be feeling cold. I'm fine, Alamdar. I hope you're fine as well. So, have you all gone back to Karachi or are you still in Lahore? Okay, so Afshan Heather, thank you for joining in and watching this session. So do pour in your comments. First, let me know what do you think about this topic, dance in the rain or learning to dance in the rain. And if anyone does not come up, then obviously I have to tell it myself. Babar Sahil Malik, thank you for joining in and watching this session. Okay, so I guess you people are clueless. You don't have an idea. Well, this topic, it's a whole quote and और उस कोर्स का जो है ना जो मतलब है दैट इज कि if you want to live a fulfilling life, so instead of avoiding storms, you need to learn how to dance in the rain. So this is the quote and this is the quote which we are going to discuss today. Mohammad Ihtisham, thank you for watching and joining this session. So अब वो किस तरह हो सकता है? वैसे तो डांसिंग इन द रेन जब आता है ना तो जहन में तो यही आता है जिस तरह बारिश में जो है ना डांस करना होगा, कोई इस तरीके का इसका मतलब होगा, या मे बी देयर आर सम काइंड ऑफ लेसन्स हाउ टू लर्न टू डांस इन द रेन. वैसे तो लेसन्स भी होने चाहिए हाउ टू लर्न टू डांस इन द रेन, क्योंकि डांसिंग इन द रेन इट्स डिफ़िकल्ट इफ़ यू डू इट फ्रॉम द प्रोफेशनल साइड पॉइंट ऑफ व्यू. बट ये है कि वैसे अगर जॉयफुल डांसिंग आपने करनी है तो फिर रेन से ज़्यादा आई गेस कोई अच्छा मौका नहीं होता जिसमें आप डांस कर सकें. And then you can be your real self when you're dancing in the rain. It's not that you'll be thinking about कि नहीं भाई ये स्टेप अगर इस तरह कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, वो स्टेप इस तरह कर लिया तो क्या कहेंगे. So when you dance in the rain, you're not showing people, it's your inner joy that's coming out. और जहाँ कोर्ट की बात है तो कोर्ट इज़ कि हमें जो है स्टॉर्म से थैंक यू सो मच यूसुफ खान फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. ओके, हमें जो तूफ़ान होते हैं या मुश्किलात होती हैं ज़िंदगी में उनसे नहीं घबराना चाहिए, रादर हमें उन्हें अपने लिए एक माइलस्टोन बनाना चाहिए और हमें जो है सीखना चाहिए कि हम उससे किस तरह अबूर कर सकते हैं. तो नंबर वन थिंग इज़ रिगार्डिंग दिस कि यू नीड टू एम्ब्रेस चैलेंजेस. और चैलेंजेस किस तरह होते हैं कि हमारी जो लाइफ है इट्स फिल्ड विद चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज़
and sometimes those difficulties and challenges are really unavoidable. क्योंकि बाज़ दफ़ा तो होता है कि you are easy to get through those challenges and difficulties, but then there are other times when it's Bilal Wasif, thank you so much for your compliment. But there are other times when it's really difficult to get out of those challenges या difficulties. So ऐसे जो है जो टाइम होता है उसमें क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम में you need to embrace. What you need to embrace, it's to embrace those challenges, क्योंकि वो जो challenges होते हैं they are preparing you for future life, या whatever आपके goals होते हैं they are really preparing you. Now I remember जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से एग्जांपल्स कोट करती हूँ, सो आज भी मैं वही आपको कोट करूँगी कि देयर वाज अ टाइम अब्दुल समद क्या चीज़ आई एम सॉरी अब्दुल समद, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही. आपने आई गेस इंग्लिश उर्दू में कुछ लिखा है, सो प्रॉबेबली आई जस्ट गो ऑफलाइन एंड देन आई विल सी व्हाट यू हैव रिटन. ओके, सो like जो difficult times होते हैं, like I remember when I did CSS and it was quite a difficult time in my life, क्योंकि उसके लिए I had been preparing for it for a year and a half or so. It's not like it just मैंने मुंह उठाया और CSS में बैठ गई हूँ. I was well prepared and after that फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे देते हो, रिटन पोर्शन दे देते हो, फिर 3-4 महीने उसका रिजल्ट आने में लगता है, फिर उसके बाद जो इंटरव्यू वाला सेशन होता है वो तो कंपैरेटिवली 1-2 महीने में वाइंड अप हो जाता है, और फिर उसके बाद जो आपका वो होता है फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, अगेन दैट डजंट टेक मच टाइम. सो ये है कि वो जो सारा प्रोसेस होता है इट नियरली टेक्स 1 year और सो. सब कुछ जो है रिटर्न करने के बाद, इंटरव्यू करने के बाद, क्लियर करने के बाद, देन यू गेट द फाइनल रिजल्ट्स. So what happened was that I cleared the written portion, but I couldn't make it in the interview. So finally, the end result was I wasn't selected as a CSP officer, and then it was a difficult situation. It was a challenge for me, but then um, how I cooped up with that challenge was that I sat in for another time, for a second time, and again the same scenario. I passed the written, but couldn't make it in the interview. तो फिर उससे मुझे उस चैलेंज से क्या समझ आया, उस चैलेंज से मुझे ये समझ आया इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि द काइंड ऑफ आउटस्पोकन पर्सन आई एम, आई वुड हैव बीन एन अनफिट इन द bureaucratic circle. So I just let it go. And how did I let it go? I indulge myself into different skills, या वो चीज़ें जो कि मुझे पसंद थी या जिनका मुझे था कि भी this is my forte. Like if I'm outspoken, I could always address different social issues concerning women, issues concerning men, issues concerning violence, issues concerning children, then social work, community work. Now these are my forte. Plus I involved myself into event management and collaborations and communication. So ये वाली जो चीज़ें थी, so these were my forte. So if I was going to be a civil servant, then probably I wouldn't have this opportunity. I wouldn't be able to carry out myself the way I can carry out right now. क्योंकि right now I can speak anything. I can speak anything that is at the top of my mind. I don't have to look towards other people, या जिस तरह bosses होते हैं किसी भी environment में. So I don't have to look towards them and ask for their permission, या जो एक code होता है, even in the bureaucratic circle there's a code. In fact, in many organizations there are many codes which you need to follow, कि ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी. If you're on social media तो आप ये बात करेंगे, आप ये बात नहीं करेंगे. And then there are so many other rules. So I am not a rule abider, and that's why I cannot work under anyone. I can work with people in collaboration at the same level, yet learning from my seniors as well, but not under them. Yeah, I would never like to work with people who would tell me कि you have to do this, you have to restrain yourself, you have to put a zipper on your lips. So I'm not that kind of person. इसलिए what I do, I love to do what I do, and that's how I survive, and that's how I carry out myself. So ये जो यानी मेन जो चीज़ थी, that was how to embrace challenge. So CSS, though it was a difficult situation and it was a difficult scenario, and it took some time to get out of that scenario,
but I embrace that challenge instead of running away from that challenge या just thinking कि ओहो मैं तो फेल हो गई तो अब मेरा क्या बनेगा जिंदगी में, अब मैं तो नाकाम हो जाऊंगी. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वो इसी तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलना शुरू कर देती है इफ दे जस्ट गेट वन फेलियर. So I won't say कि this was just one failure. Yes, it was something that was important to me. But ये है कि अगर नहीं हुआ तो I did not end my life. So इससे क्या चीज़ प्रूव होती है? इससे एक चीज़ तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आई एम अ सर्वाइवर एंड आई नो हाउ टू सर्वाइव. Or then there are going to be many of you who might have gone through certain challenges and situations, and you might have come out of those challenges. Or if you can connect the different dots, like it's not just one failure जिसे आप कहें कि भी आपकी पूरी लाइफ उस फेलियर पे बेस्ड है. There are many small failures which might lead to a big success. So you need to along the way consider those failures and those successes, and you have to be grateful for them, and you need to be positive as well. So this is the number one thing. You need to embrace challenges and difficult situations. अच्छा, मजीद इस पे अगर हम बात करें तो इसमें resilience और adaptability भी आ जाता है. अब resilience किस तरह आता है? When you are facing setbacks. अब जो challenges होते हैं उसमें setbacks भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती हैं. नाउ डूइंग CSS और फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, देन इट वाज अ सेटबैक, और उस सेटबैक को जब फाइट किया गया तो इट इट बिल्ड resilience and adaptability. So adaptability तो I would say it's a core. अगर ये कोर स्किल है ना आप में adaptability की, तो you can adjust anywhere, but adaptability only in that case when it's not compromising with your values. अगर if अगर देखिए core values होती हैं हर एक की, like for me ethics is very important, and then ethics में there are certain things which I prioritize. I like to work with people who are honest. I like to work with people who are loyal. I like to work with people who are sincere. Sincere not only in theory but also in practice. Then I like to work with people who are like they have a passion for doing something, passion for making a change, या passion for impacting the society in a good way. Or then I don't like people who are greedy. क्योंकि जो greed होती है ना, that always keep you one step back. क्योंकि then you are just looking at the personal gains, you are not looking at the greater gain. So ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको जो है ना एडेप्टेबिलिटी में आप जो है एडजस्ट कर रहे होती हैं. देन देयर आर मैनी पीपल जिनके साथ आपको वैसे ही काम करके मज़ा आता है. मे बी इट्स नॉट अ जॉब और एनीथिंग लाइक दैट, बट जस्ट देयर कंपनी, यू लाइक देयर कंपनी, यू लाइक टू टॉक टू देम, you like to exchange different knowledge among each other. So these are the things which are very important, or ethics matters a lot in your work environment and your personal life as well. अच्छा, देन इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है इन सारी चीज़ों में, यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. और वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव किस तरह होता है कि व्हेन यू नो द डिफिकल्ट सिचुएशन इज देयर बट स्टिल यू डू नॉट लूज होप, एंड स्टिल कि भाई यू कैन पॉजिटिवली कम आउट ऑफ इट. उसके लिए ओके, यहाँ पर मैंने अपनी लाइट ही नहीं खोली, वैसे भी मेरा चेहरा ज़्यादा चमक रहा है. आई जस्ट ओपन दिस लाइट, सो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा. आई जस्ट फॉरगॉट. ओके, सो आपने जो है मिर्जा साफ़ी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वॉचिंग. अब्दुल सलाम, थैंक यू सो मच. You always give so beautiful messages. Thank you so much. Carla Richman, thank you so much for joining in, and at the end I'll try to bring you on camera if that's possible, and if that's not an issue on your side as well. Okay, Abdul Samad, thank you so much for joining in. Okay, so you need to have that positive perspective, and when you have that positive perspective, आप ये देखेंगे there are so many situations जहाँ पर ये जो आपकी positive thinking है, it's going to pay you off, क्योंकि you are going to be viewing things on a broader scale and in a positive way. हर situation को handle करने के लिए दो तरीके होते हैं. Either you think about it creatively and positively,
पॉजिटिवली या यू लुक एट इट टोटली इन अ नेगेटिव वे. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को देखते हैं. बट द मोर पॉजिटिव यू हैव, the more the more firm you are in thinking that you might come up with a positive and a creative solution, so the better it's going to be for your overall grooming. और यही और इसी तरीके से you will be able to dance in the rain. So if you are not going to have that positive mindset, so it's going to be a difficult task to dance in the rain. Okay. देन इसमें जो है हम अगर एक और चीज़ देखते हैं तो दैट इज़ यू नीड टू हैव अ माइंड सेट, अ शिफ्टिंग माइंड सेट. शिफ्टिंग माइंड सेट से मेरी मुराद ये है कि यू नीड टू ओपन योर माइंड टूवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स एंड डूइंग न्यू थिंग्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग एज वेल. एंड उससे जो है फ़ायदा क्या होगा, उससे यही फ़ायदा होगा कि यू विल बी एबल टू व्यू द सिचुएशंस इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आपका माइंड खुला होगा तो इट्स गोइंग टू इट्स गोइंग टू बी flowing with a lot of ideas and a lot of solutions as well. And those ideas, let me, like I would tell you कि भाई वो जो ideas होंगे आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ऐसे ऐसे ideas आपके जहन में आ सकते हैं. But then again, for that you need to trust yourself, you need to trust your capabilities, you need to have a firm trust in whatever you are doing is right. So बाज़ दफ़ा क्या होता है कि when you are set to do something, so उसमें जो है इर्द गिर्द के जो influences होते हैं, now those influences it's not always necessary they are positive. There can be very negative influences, there can be very negative people. And आप ये देखते होंगे कि आपने कोई काम स्टार्ट किया तो इर्द गिर्द से बहुत से लोग आ जाते होंगे मुखालिफ कि भाई नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, ये इस तरीके से नहीं हो सकता. या लोग कहेंगे कि भाई फलाने ने इस तरह किया था तो आप भी इस तरह करेंगे तो आपको लगता है ये काम सही हो जाएगा. तो द थिंग इज कि ओके, लोगों ने अपने टाइम में अपने तरीके से किए होंगे, बट व्हाट मेक्स यू डिफरेंट देन द अदर पीपल? एवरी वन इज डिफरेंट, राइट? और वो डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि एवरी वन इज यूजिंग देयर माइंड. एंड जो चीज़ें या जो स्ट्रैटेजीज किसी ने अपने टाइम में यूज़ की हैं, दे माइट बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग देयर टाइम और इन देयर सिचुएशंस. आपकी जो सिचुएशन है इट हैज़ टू बी डिफिकल्ट, यानी यू आर इन अ डिफरेंट सिचुएशन. सो अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट है एंड the circumstances and the factors are not like the ones who have used those strategies, so then you are going to use your own mind and you are going to craft your own strategies. और फिर उसके मुताबिक you are going to take a decision, and that's what makes you different and unique from other people. That is your authenticity, and that is how you are able to connect the dots between whatever is going or whatever is happening, yeah, where you are standing. So this is how your mind changes when you are prone to learn from other people, but you are applying the strategies which you think are best in your present moment. So that is covered under mindset, minded shift, mindset shift, sorry. Okay, then इसके अलावा एक और जो चीज़ इसमें आ जाती है, अच्छा ये चीज़ ऐसी है जो कि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, दे डू नॉट डू दिस थिंग, बट दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी फ्रूटफुल. एंड व्हाट इज़ दिस थिंग? Noman Munir Siddiqui, thank you so much for joining in and watching this session. Shahina Shah, thank you so much for joining. Okay, Asim, which Asim are you? Asim Ghazampar, I guess. Thank you so much for joining and watching. And Abdul Qadir, thank you. Now, today I see a lot of people. क्या हो गया भाई, ऐसे क्या चीज़ चेंज हो गई है कि आज इतने ढेर सारे आ रहे हैं, एंड सो मेनी पीपल हुम आई कैन ब्रिंग ऑन कैमरा एज वेल. वेल वो तो आखिर की बात है, अभी तो नहीं ला सकती. ओके, सो ये चीज़ जिसकी मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, दिस इज फाइंडिंग जॉय along your journey of success या along the journey. अब उसमें क्या होता है कि when you are journeying थ्रू योर लाइफ, या आपकी लाइफ जैसे जैसे जो है प्रोग्रेस करी है या आप ग्रो कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू आर फेस्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ जॉयज. अब इट्स नॉट नेसेसरी वो जॉयज बहुत बड़े हों, हो सकते वो जस्ट प्लेन सिंपल जॉयज हो. सो
ये चीज़ तो मैं आपको बार बार अपने हर सेशन में कहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट सक्सेस जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं, और फिर वो सक्सेस अचीव करके यू टैग इट कि ओ भाई मैंने ये सक्सेस अचीव कर ली। वैसे मैं किसी और चीज़ का जिक्र नहीं करती, मैं आपसे जिक्र करती हूँ जिस तरह फेसबुक है। फेसबुक पे यू नो व्हेन यू स्टार्ट गेजिंग व्यूअर्स और viewership या followers, yeah, you get to make good friends. So I see people, you know, tagging everyone, oh I have got this much followers, oh I have got that much followers. So this is they are like they're everyone is different. अब it all depends कि आपका क्या mindset है. Like people would always think about कि भाई इतना जो है गोल, like they'll keep a goal in their mind. इतना गोल हो गया, इतने followers हो गए, तो I'll you know shoot out a video or I'll shoot out a thanks note. But why? अगर आपका जो है एक भी फॉलोअर है, क्या आप उस पर खुश नहीं हो सकते? क्या आप उसको नहीं सेलिब्रेट कर सकते? सो दिस इज द डिफरेंस इन थिंकिंग. आपके चाहे जो है 10K फॉलोअर्स हैं या चाहे आपका 1 फॉलोअर है, बोथ आर सेम. बोथ आर सेम फॉर द थिंग इन टर्म्स ऑफ जॉय. if you are going to look at कि भी इतने followers हो जाएंगे तो I'll be very thankful and this is going to be a huge success. I think the first follower, that is the first joy you need to celebrate, and then the 10K follower, that is also a joy, but you need to you know accept and be grateful for the joys as they come along rather than waiting for the bigger gains. So I think it's clear and you might be able to understand and resonate as well. So if you are able to understand, give me a thumbs up and leave any comment in the inbox as well if you resonate with what I'm saying. So I'll be waiting for your emojis. अब मुझे emojis तो दिखा देना, अच्छे लगते हैं emojis आते हुए, वरना मुझे वहां पर फेसबुक पे जाकर देखना पड़ना है कि भाई कौन इमोजी भेज रहा है या नहीं भेज रहा. एनीवेज, सो दिस वाज वन थिंग. अच्छा, अब हम जब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जॉय से आगे जब हम बढ़ते हैं, तो वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन आवर पर्सनल डेवलपमेंट. अब वो पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? वो पर्सनल डेवलपमेंट इसी तरह हो सकती है कि आप जो कुछ लर्न कर रहे हैं, डोंट स्टॉप, कीप ऑन लर्निंग. क्योंकि when you are going to keep on learning, you are going to keep on grooming and you are going to keep on developing, and that is going to be your personal development and that is going to be your professional development. If you are in a professional setting, या आपका कोई प्रोफेशनल सेटअप है, या इफ़ यू आर वर्किंग फॉर समवन, या इफ़ यू हैव योर ओन सेटअप एंड यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन, तो देन उसमें जो भी आपकी स्किल्स हैं, वट एवर स्किल्स यू आर एड्रेसिंग, यू नीड टू अपग्रेड दो स्किल्स. और जैसे जैसे आप उसको अपग्रेड करेंगे, यू विल फाइंड कि यू आर एट अ टोटली डिफरेंट लेवल एज कम्पेयर टू जिस लेवल पे आप थे और अब आप किस लेवल पे हैं. अच्छा, इससे मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग विद ADB, तो उसमें जो है दो आर टीम, इट वाज अ स्मॉल टीम और प्रोजेक्ट बेस्ड थे इट वाज, बट ये है कि मेरे जो सुपीरियर थे, ही वाज अ वेरी एनलाइटेंड पर्सन, और he always you know had different trainings going on and he would always you know suggest different people. चूंकि मेरा ताल्लुक जो है ज़्यादा जेंडर से था, so he would always you know suggest me and he would send me to training जहाँ पर जो है ना जेंडर इम्पार्ट किया जाता है, या वहाँ पर जो है जो भी जेंडर से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें होती हैं, and I would always go and you know learn that and then come back and try to apply that on the project as well. So ये जो चीज़ें होती हैं, ये प्रोफेशनल, when you are in the professional field, you keep on doing that, and then even though you are not in the professional field, still वो जो आपकी trainings होती हैं या आपने जो knowledge impart किया होता है या लिया होता है, you start you know applying it in your practical life and you start imparting it to other people जिनको चाहिए होता है. Like there are many people who are studying gender studies and then they have confusions, क्योंकि one thing I remember कि when I was doing my masters in gender studies from Illama Iqbal, तो वहाँ पर जो कोर्स बुक्स थी उसमें it was not something जो कि I would say कि everything was you know comprehend आप उसको properly नहीं कर सकते थे, for the simple reason कि you could easily feel that it's plagiarized.
कोई पैराग्राफ जो है किसी ऑथर का डाला होता था, कोई पैराग्राफ किसी ऑथर का डाला होता था ना। ये चीज़ें आप किस तरह कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं व्हेन यू आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग रिसर्च, या व्हेन यू आर इन द हैबिट ऑफ, व्हेन यू हैव hands on experience, when you work with people, when you go and see their problems and discuss with them, और फिर उसके बाद आप थ्योरी पढ़ते हैं, तो आपको दोनों में एक गैप नज़र आता है, and you are able to fill that gap through your experiences. So when I come live and I share these personal experiences with the topic, so it's for a simple reason कि everything is not about theory. Agar you have hands on practice, that's an asset, and that's how you're able to resonate with different aspects and different situations and conditions going on with your life and other people's life. So you're in a much better position to comprehend. So सिर्फ थ्योरी की बातें करना, थ्योरी तो जो है हर कोई पढ़ सकता है, पर जब तक थ्योरी में जो है आप लॉजिक नहीं लाएंगे, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं लाएंगे, तो नो वन इज गोइंग टू बी एबल टू रेजोनेट कि वाकई में रियल लाइफ में ये चीज़ें होती हैं. सो लाइफ इट्स नॉट डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल आप उसको डिफिकल्ट बना दें. अगर आप जो है हर रोज़ अपना जो दिन है वो इस तरीके से गुजारें कि भाई इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, तो इट इज़ेंट कॉम्प्लिकेटेड. और वो कॉम्प्लिकेटेड किस तरीके से नहीं हो सकती कि जब आप वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो आपको करने का शौक होता है. अगर आप कोई ऐसा काम करें जिसका आपको करने का शौक नहीं, लाइक मुझे डस्टिंग करने का शौक नहीं है, और मुझे डस्टिंग करने का क्यों शौक नहीं है, क्योंकि आई एम डस्ट एलर्जिक. सो जब मैं डस्ट इनहेल करती हूँ, सो इट जस्ट गेट्स इनटू माय नॉस्ट्रिल्स एंड इन माय थ्रोट, एंड देन मेरा गला बंद हो जाता है. सो आई कैन नॉट इवन स्पीक ड्यू टू दैट डस्ट. सो दैट्स वाई आई डू नॉट लाइक डूइंग डस्टिंग. क्योंकि यस, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत है एंड आई डोंट हैव एनीवन जो कि मुझे डस्टिंग करके दे, एंड देन देयर आर पीपल और गेस्ट कमिंग इन द हाउस, देन आई हैव टू डू द डस्टिंग, बट वो मजबूरन होती है. बट दैट इज समथिंग आई डू नॉट लाइक. रादर देन कोई मुझे ये कहे कि हाँ भाई आप बैठ के जो है ना, ये जो डस्टिंग वाला टाइम है 2 घंटे का, इसमें आप बैठ के कोई जो है आर्ट का काम कर लो, या यू कैन राइट समथिंग, या यू कैन डू एनी थिंग विच यू लाइक. सो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट. या कोई मुझे कहे कि भाई इस टाइम में आप बैठ के जो है कम्युनिकेट कर लो, कोलैबोरेशन कर लो, तो दैट इज़ वेरी ईजी फॉर मी. बट डस्टिंग इज़ नॉट. सो आई एम सॉरी. सो यू नीड टू सी कि आपका फोटे क्या है, एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट फोटे रादर देन जस्ट गेटिंग अवे फ्रॉम दैट फोटे, एंड थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स जो कि जो है दे आर नॉट ऑफ योर इंटरेस्ट, या दे डोंट ऐड एनी वैल्यू. यस, अब वैल्यू से मुझे जो है ना अगेन एक बात याद आई. नाउ दिस इज अगेन पर्सनल डेवलपमेंट. वैल्यू में यू नीड टू वैल्यू योर टाइम. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट टॉक. डज इट मेक यू, डज दैट टॉक mean anything? Is it valuable? Yeah, is it adding some good in other people's life? Like there are times when there are so many people who are approaching, and they might be even approaching you as well, but then you have to analyze कि भाई is it worth it? Is the talk that important? या किसी की कोई कंडीशन है तो is it really that important? या हो सकता है दूसरे बंदे के लिए इम्पोर्टेंट हो पर आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो. बट देन यू हैव टू एनालाइज एंड यूज योर ब्रेन कि किस चीज़ को आपने कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना. क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि इश्यूज जो है इतने डीप नहीं होते, एंड दे कैन बी ईजिली एड्रेस्ड इन 5-10 minutes. बट देन चूँकि जो है बातों से बातें निकलती आती हैं, एंड देन दी कन्वर्सेशन गोज अ लॉन्ग वे. सो but then there are many people who are just time wasters who just come in your chat box और बस उन्होंने एक ही चीज़ पूछनी होती है. देखिए, मैंने मेरी जितनी प्रोफाइल फेसबुक पे है ना, इट्स अ रियल प्रोफाइल, इट्स नॉट फेक. So that's why I come live and give these sessions. But still, you people, you don't believe what I say in my profile. Still, you have to come in my inbox and you have to ask me again and again, what do you do, what do you do, where do you live? अच्छा जी, चलो ठीक है, I live in इस्लामाबाद. But then किसी से सेक्टर पूछने की क्या ज़रूरत है भाई? कोई किसी सेक्टर में रहता है, उससे आपका क्या होता है? सोशल मीडिया, इट्स नॉट दैट फ्री प्लेटफॉर्म. इट्स नॉट लाइक भाई आप किसी के घर चले गए हैं तो आप उससे जो है ना सब चीज़ें जो है पूछ लें. यू हैव टू बी वेरी वाइज in selecting your words or in asking people certain questions. And Islamabad, it's a very small place,
It's not that big. गिने चुने यहाँ पर sectors है, and it really doesn't matter where the person lives. If I have an office, like I work online, ठीक है, तो मेरा जो office है, that is my home, and I cannot give the address of my home unless I have an office. So ये वाले जो क्वेश्चन है कि वेयर इज योर ऑफिस, वी वांट टू कम एंड मीट यू, आई डोंट हैव एन ऑफिस, आई हैव अ होम, एंड माय होम इज माय प्राइवेसी, एंड आई डोंट वांट पीपल टू indulge in my privacy. So this way, or contacting people on phone, that is more appropriate for me. So that's why at times, if I find people who are serious and who really want to work or want to collaborate regarding their businesses, I just exchange my telephone number with them. Otherwise, I do not give anyone the permission to come into my private space. And then in future, God knows, maybe I have an office and then I can invite everyone. But then there would be a security outside, because that's not also going to be an easy task to entertain everyone. ओके, सो ये पर्सनल डेवलपमेंट की हमने बात कर ली, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर ली, और फिर उसके अलावा हम एक और जो मज़ीद बात करते हैं, दैट इज़ बिल्डिंग रिजिलियंट कम्युनिटीज़. अब रिजिलियंट कम्युनिटीज़ किस तरीके से बनती हैं? रिजिलियंट कम्युनिटीज़ इसी तरीके से बनती हैं कि व्हेन यू नो समथिंग एंड द कम्युनिटीज़ आर देयर टू सपोर्ट यू और ऐड समथिंग न्यू टू योर एग्जिस्टिंग नॉलेज. सो इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि यू आर लर्निंग, या यू हैव लर्नड, और आपका जो नॉलेज है, यू आर गेनिंग मोर नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ अदर पीपल. सो इस तरीके से जो है ना, कम्युनिटीज कम इन टू बीइंग. नो वन कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन. everyone needs someone to talk to, someone to exchange their knowledge. या it can be in any sense, प्रोफेशनल सेंस में हो सकता है, पर्सनल सेंस में हो सकता है. क्योंकि what I believe and what I observe, there are very few people who have this ability of listening. अब ये जो ability है, you know what, जब हम IELTS का एग्ज़ाम देते हैं तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि यार ये इन्होंने 4 मॉड्यूल्स क्यों रखे हुए हैं, जिसमें स्पीकिंग भी है, लिसनिंग भी है, रीडिंग भी है, राइटिंग भी है. अगर जो है आपका जो कैपेबिलिटी है या IQ है, वो जो है इस चीज़ पे चेक होना है कि आपको कितनी अंग्रेजी आती है, तो उसके लिए 1-2 मॉड्यूल्स भी तो काफ़ी है ना. तो सारे 4 मॉड्यूल्स क्यों रखे हुए हैं? वेल, उस टाइम पे ये चीज़ समझ नहीं आती. बट आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई हैव कम टू दिस सिंपल थिंग कि लैंग्वेज में जो ये डिफरेंट स्किल्स हैं, दीज आर इंटरडिपेंडेंट एंड वन इज लिंक्ड विद अनदर. सो अनलेस एंड अनटिल you are a good listener, you can't be a good writer, yeah, you can't be a good reader. So everything is complemented. But यहाँ पर जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, that is listening, and that is active listening. And active listening is an asset, it's a skill. और अगर किसी के पास ये skill है ना listening की, तो भाई आप खुदा जानिए, I guess you are a very lucky person. क्योंकि why you are lucky? You have that something in you which attracts people to come to you and share their stories with you. Yeah, they want to collaborate with you, or they might even want to just listen to what you are saying, even though they might know okay, you don't have a solution to their problems, but still they know that you are there and you can make a difference. So it's all up in the mind. And listening, it's a really great skill. अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, एंड यू वुड सी कि भाई आपको ज़िंदगी में ना इसके बहुत फ़ायदे होंगे. ये तो चलो मैंने एक प्रोफेशनल एसेट आपको बताया ना, बट एक्टिव लिसनिंग का, नॉट जस्ट लिसनिंग तो वो भी होती है कि दूसरा बोर है और आप कह रहे हो अच्छा यू आर नॉट लिसनिंग. एंड व्हाट हैपन्स फ्रॉम दैट काइंड ऑफ लिसनिंग, कि जो बंदा या बंदी जो है who are trusting you and they want to listen what you have to offer, and you are giving them they think you are giving them ear, but rather उसमें जो है अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हो और आप जस्ट हूँ कर रहे हो, तो उससे जो इम्प्रेशन जो उस बंदे को जाएगा या बंदी को जाएगा, दैट वुड बी कि दे आर नॉट गुड इनफ, या they cannot get your attention, या they cannot get your focus.
सो किसी को आप इस चीज में क्यों लेकर आते हैं कि दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट? इजंट दैट बेटर कि आप जो है उनके साथ जो भी आपकी कन्वर्सेशन हो, चाहे इफ इट्स ऑफ 10 to 15 minutes, बी एक्टिव इन लिसनिंग, क्योंकि देन यू विल बी डूइंग क्या कहते हैं, फिर आप जो है उनके टाइम का हलाल कर रहे होंगे ना सही तरीके से, कि यू विल बी लिसनिंग टू देम rather than just doing हूँ. So whenever I talk with people, I try to be I try nahi, I am 100% present and I am listening to each and every word they are saying, क्योंकि it is something they want to share and they want to, yani at times there are times when people just want you to listen to them, then there are times when people want a solution for it na. So you need to be an active listener rather than a passive listener, क्योंकि जो एक्टिव लिसनिंग है वो आपको, दोज हु आर मैरिड ओवर हेयर, और जो भी मेरे भाई बहन जहाँ पर शादीशुदा हैं, वो ये चीज़ जो है ज़्यादा फेस करते होंगे फ्रॉम देयर पार्टनर्स, दैट while you are speaking to your partners. So it can, you know, apply to both partners. It can apply to the husband, it can apply to the wife, या जो भी आपके सिनेरियो है कि see if the wife is talking to the husband तो क्या होता है. So those of you who are married over here, you can easily resonate कि भाई मिसेज आपसे बात कर रही हैं, आप जो है मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने टीवी खोला हुआ है और आप जो है कह रहे हैं सो उसमें क्या होगा, द वाइफ वुड नो कि भाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट शी इज सेइंग. सो उसका जो है वो हल क्या करेंगी, वो चुप कर जाएंगी. और देन वो जब चुप कर जाएंगी तो क्या होगा, ओके, टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स. सो आई नो कि आप मेरी बात सुन रहे थे rather than you were focusing on my face features or my lipstick. So just let me know in the comments what you think about it. चलें जी, खामोश तो ना होना, वैसे तो आप लोग वैसे ही खामोश हैं, बट ये है कि कोई बोले तो सही ना, कोई कुछ तो लिखे कमेंट में, मुझे पता तो हो आप क्या सुन रहे थे, व्हाट आई वाज सेइंग. ओके, आई एम वेटिंग. मैं स्क्रॉल करके देखूंगी किसने कमेंट किया है. ओके, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और मुझे नज़र आ रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हैं. आई कैन सी यू. यस, आई एम फाइन. ओके ओके, आई एम स्टिल वेटिंग. अच्छा ठीक है, आपने नहीं जवाब देना. ओके ठीक है, ना जवाब दें. राशिद मियाँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वॉचिंग. करीम बलोच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. मुनाफ, थैंक यू. ओके, सो उसका क्या होगा नतीजा, उसका नतीजा ये होगा कि जो मिसेज है वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाएंगी, वो कुछ और काम करना शुरू कर देंगी, या शी विल totally shift her attention, and she might shift her attention towards doing better things rather than just talking to you. Yeah, just thinking that maybe my talking is wasting his time and he doesn't have time for me, and he doesn't want to listen what I have been going through the whole day. क्योंकि अक्सर जो खामद होते हैं, when they come home, they say कि ओके मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, चलो अब नमाज मैंने पढ़ ली, अब खाना दे दे, and then they revert to whatever routine they have. So if you are a good partner, if you are a good listener, then you need to listen to your wives. Similarly, if you are a good wife, then you need to listen to your partners, whatever that is. And that is when they come home, you can always offer them a glass of water, and then you can ask them, okay, when would you like to have dinner? और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उनके साथ बैठ के कोई टीवी देख सकते हैं अगर टीवी पे कोई आपके काम की चीज़ आ रही हो, क्योंकि आई नो कि आई डोंट लाइक टू वॉच टीवी. और but then instead of watching the TV, you can just talk to each another about the day, asking how the office was. But if you are a working professional, it's always better not to talk anything regarding your office in home. उससे क्या होता है, उससे घर का माहौल ख़राब होता है. घर का माहौल क्यों ख़राब होता है, क्योंकि ऑफिस की जो टेंशनें होती हैं वो जब आप घर उठा कर लाते हैं, दिस इज़ फॉर बोथ द जेंडर्स, बोथ द मेल बोथ द फीमेल. जब आप ऑफिस की टेंशनें घर उठा कर लाते हैं तो वो टेंशन जो आप दफ्तर में भुगता कर आ रहे होते हैं वही घर में आकर आप रिप्ले करते हैं, तो उससे माहौल ख़राब होता है, एंड नो वन फील्स कंफर्टेबल. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द वाइफ वांट्स टू लिसन टू गुड वर्ड्स फ्रॉम द हस्बैंड, whether it's regarding the cooking, yeah, whether it's regarding the house, yeah, whether it's regarding anything, yeah, whether it's regarding your own personal self. Then similarly, if the husband is coming home, they would want to listen from the wife about the day of the husband,
or and then there are other things as well. Yani if he's feeling well, ये भी जो है you can always ask, and then तबीयत का आप पूछ सकते हैं और खाने पीने का पूछ सकते हैं, and then you can ask about plans for the other day. So what are the plans, या आपके जहन में कोई भी चीज़ है, if you want to visit some place, you can always ask that and you can make a plan. So there are so many things, but you have to discuss that by listening to each another, and that has to be active listening. और जहाँ तक active listening का सवाल है, I think there's a blog I wrote about relationships, and you can go and check that blog on my website, which is www.spahatame.com. so वहाँ पर relationships से related बहुत से topics हैं जो आपको मिलेंगे, and you can read any of those topics and you can apply that to your own life. So those are good tips which I have shared over there, but since those are relationship topics, so उनको मैं अभी discuss नहीं करूँगी क्योंकि अभी I'm discussing something else. ओके सो ये हो गया रिजिलियंट कम्युनिटीज़ का एंड एक्टिव लिसनिंग का. अच्छा, देन एक और जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. अब वो क्रिएटिव और इनोवेशन जो है कहाँ पर आती है? वो ऐसे ही आती है कि भाई व्हेन यू हैव सर्टेन थिंग ऑन योर हैंड, यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट सोल्यूशन हैज़ टू बी क्रिएटिव. और वो क्रिएटिव इसी तरीके से होगा जब आपका माइंड खुला होगा, एंड यू विल बी पोरिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, एंड कुछ नॉलेज होता है जो कि ऑटोमेटिकली इट कम्स टू यू, एंड देन कुछ नॉलेज होता है लाइक व्हेन आई एम डिलीवरिंग दिस सेशन, what to say, what not to say, it's coming automatically to me. It's not that it's something I have prepared, like if acha, then there's something very different about me. I like to do things extempore. So right on spot आप मुझे कोई भी चीज़ दे दें, I would produce something on that and deliver that. But then there are people जैसे university teachers होते हैं. Even when I used to teach in university, I did not used to prepare my lectures. I remember that. So I would just go and deliver it, and voila, my students were very happy. Well, back then I was a young teacher, quite young than I am right now. Because back then I was a fresh postgraduate, so there was a lot of difference. But still, I still like to do things extempore. क्योंकि जिस चीज़ में जो है आपको बनाना पड़े या सोचना पड़े, it's not natural. It's more of fixated things, and you can't use your mind. So यहाँ पर जो creativity की मैं बात कर रही हूँ, there are things like if I'm delivering this session, it is all extempore, and it's the things, it's the words, the whole composition, it's coming naturally. So मेरे माइंड में इट्स वर्किंग लाइक अ रील, जिस तरह एक मूवी चल रही होती है, आपकी कोई भी पसंद की मूवी हो सकती है. तो ये टॉपिक्स और जो कैप्शंस हैं वो उस तरीके से मेरे माइंड में चल रहे होते हैं, एंड आई जस्ट कीप ऑन सेइंग व्हाट इज कमिंग in my mind. And then there is some knowledge which you need to acquire. और वो acquire इसी तरीके से करते हैं कि you have a caption या you have a topic in your mind, you have certain questions, so you go and research on those questions and you see what different people have quoted in their researches or what they have written. But then it all depends how you apply that knowledge. If you can do it creatively, it's fine, but if you're going to do it the bookish way, तो जो bookish चीज़ें होती हैं वो आपको वैसे ही नहीं समझ आती. So bookish जो है ना, when you are having a formal education. Amir यार, thank you so much for joining in, and you were calling. I cannot attend your call while I'm in a session. So this is another thing. अच्छा, फिर इसमें जो है एक और जो चीज़ आती है, आई नो इट्स गेटिंग लॉन्ग, आई जस्ट ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. बस एक दो पॉइंट्स हैं एंड देन फिर ये सेशन ख़त्म हो जाएगा. यू हैव टू बी माइंडफुलनेस, एंड योर माइंडफुलनेस इट हैज़ टू बी प्रेजेंट एज वेल. माइंडफुलनेस ये नहीं है कि आप माइंडफुल हैं और प्रेजेंट ही नहीं है. सो माइंडफुलनेस और प्रेजेंस से जो है, व्हाट डू आई मीन is that whatever you are doing, you have to be present in that moment, and that's when you're going to be mindful. इसमें I would like to share the example of parents.
कि जो पेरेंटिंग होती है ना, दैट इज़ माइंडफुल. सो anything which you are teaching the children, that has to be mindful. एंड माइंडफुल के लिए यू हैव टू बी प्रेजेंट. इस तरह नहीं है कि भाई बच्चा छोटा है और बच्चे को भूख लगी हुई है और आपका जो है हाथ में मोबाइल है, चम्मच आपका दूसरे हाथ में है और आपको पता ही नहीं बच्चे का मुंह किधर है, चम्मच उसके नाक में जाए या मुंह में जाए. सो दिस इज़ नॉट माइंडफुल पेरेंटिंग. माइंडफुल पेरेंटिंग इज़ व्हेन यू आर प्रेजेंट 100%. सो सिमिलरली ये माइंडफुलनेस जो है हर चीज़ में अप्लाई करती है. व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क उसमें भी अप्लाई करती है. The more focused you are in what you are doing or what you are delivering, it's going to show how focused you are and what goal you have to achieve. But then you have to be mindful, and then you have to be, वो कहते हैं ना मौजूद होना है उस लम्हे में, तो you have to be मौजूद in that लम्हा, mindful in that present प्रेजेंट टेंस में नहीं, प्रेजेंट टेंस में नहीं, जो सिचुएशन है उसमें आपका प्रेजेंस होना ज़रूरी है. यू हैव टू बी माइंडफुल रादर देन आपका माइंड जो है स्विच कर रहा हो, कभी पास्ट में जा रहा हो, कभी फ्यूचर में जा रहा हो और आपको पता ही ना हो कि आप तो प्रेजेंट में हैं. सो यू हैव टू रिमेन फोकस एंड बी प्रेजेंट इन योर प्रेजेंट सेल्फ. You can gain this mindfulness through doing mindful exercises, like you can do yoga, मेडिटेशन. योगा में मेडिटेशन आप कर सकते हैं और हाफ एन आवर की भी आप अगर मेडिटेशन करें, यू विल सी कि भी आपकी जो एनर्जीज हैं दे आर गोइंग टू कम एट वन पॉइंट एंड यू विल बी एबल टू फोकस. सो वो लोग जो कि योगा करते हैं दे नो हाउ माइंडफुल एक्सरसाइजेस वर्क एंड व्हाट योगा रियली डज टू यू. It's a good way of meditating. Then there are other ways of meditating as well. You can just close your eyes and sit quietly without saying anything, without hearing any music, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं they just put on the music. But I would rather say कि if you really want to enhance your focus and you want to be mindful, you should sit in silence. और आपका जो है जो इर्द गिर्द का environment है that has to be calm rather than बहुत shouting हो या आप background में चीखें चल रही हो. So the more calm you are or your environment is calm, you'll be able to focus more and have a more good experience. Okay, this is another thing. Then इसके बाद जो है एक जो बस आखिरी बात रह गई है, चुन्नी मुन्नी सी बात रह गई है, that is you have to inspire others. And how can you inspire others? Whatever you are saying, whatever you're delivering, it has to दिल को लगी. आपकी बातें लोगों के दिल तक लगनी चाहिए. जब आपकी बातें दिल तक लगेंगी तो वो असर करेंगी. और अगर आप जो है यू जस्ट गोइंग टू टॉक सुपरफिशियल और हवा में लोगों के दिमाग से गुजर जाएगा तो वो दिल पे नहीं रखना. सो दिल पे जो है ना हमेशा कोशिश करें अच्छी बातें लगें. सो वट एवर यूर डिलीवरिंग, इट हैज़ टू बी गुड, इट हैज़ टू टच द माइंड, it has to touch the heart, it has to motivate people and inspire them to do the same good which you are trying to do. So everything regarding this, it creates a ripple effect and it comes back to you, and you have a positive impact on the overall society. So this is what I wanted to share today. And by practicing everything which I have talked about today, you'll be able to dance in the rain freely without any tension that you can't dance in the rain. So this is what I wanted to share. And if you like this session, do pour in your comments, do pour in your emojis. You can give me stars as well, and then you can also share my content. I'll upload this session on YouTube as well, so I'll be sharing my YouTube channel. आप उसको subscribe कर सकते हैं, and then whatever I'm sharing, you'll get a notification for that. So if you are going to subscribe to my YouTube channel, so it would benefit me as well, cause that's also going to give me motivation to do more good and bring good content to you, so you can learn through my life experiences and personal and professional as well. Okay, now I try to bring people on camera, since आप में से बहुत से लोग जो है on camera बैठे हुए हैं,
तो why not try? I'll try my luck. Okay, so here I go. Okay, let's see. अब कोई जो है ऑफलाइन ना चला जाए मेहरबानी करके. Okay, let's see. It's rotated. Okay, it's back. Let me see who I can bring on camera. Okay, Shahina Shah, I'm going to bring you on camera. I hope that's okay with you. If that's okay, you can accept, and if it's not okay, you can just decline. Okay, so let me see who else is there. Okay, I know Sayyid Abdul Ghaffar Shah, you are here, but I don't want to bring you on camera, and you know the reason. अच्छा भाई, सैयद अब्दुल गफ़ार शाह के साथ मेरे कोई पर्सनल जो है इश्यूज नहीं है. इट्स जस्ट दैट वो बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ करते हैं, एंड आई एम नॉट यूज टू सो मच तारीफ़. आई रादर लाइक पीपल टू कॉम्प्लीमेंट ऑन व्हाट आई एम डूइंग एंड ऑन माई स्किल्स रादर देन ऑन माई पर्सनल सेल्फ ना. सो इस वजह से सैयद अब्दुल गफ़ार शाह को आई वोंट ब्रिंग ऑन कैमरा. Okay, Babar Sohail Malik. Okay, I'll try to bring you on camera. Okay, I can't bring you on camera. Okay, मेरा ख्याल है कल कोई लकी चांस हो गया था कि I was able to bring Dr. Firdaus on camera. Babar Sohail. Okay, can't bring you. So, I guess there are many whom I can't bring on camera, and I don't know why I can't. Asim Ghazampar, let me try you. ओके, आई कांट ब्रिंग यू. अच्छा भाई, आप लोग पहले ही जो है ना मेरा ख्याल है कैमरे को ऐसे रखते हैं कि मैं आपको बुला ही ना सकूं कैमरे पे. चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी फिर सही. आई एम जस्ट ट्राइंग और स्क्रॉल करते हुए इट्स स्क्रॉलिंग इन अ वे कि वो फंस रही है स्क्रीन. ओके, आई जस्ट सी, लेट मी सी कार्ला. आई सेड आई ब्रिंग हर ऑन कैमरा if I can bring her. She's a lovely lady and she teaches English in Rehan School, Kuragi campus. And let me just see where she is. I just saw her and I can't, I'm just scrolling and scrolling. Scrolling से मुझे जो है एक चीज़ याद आई, but I won't mention it here. Otherwise my kid would say कि अम्मी मैंने आपको बात बताई थी और आपने जो है सोशल मीडिया पे बता दी. And then I won't want anyone to hear it as well. So I'll just keep it to myself, scrolling. Okay. Where are you? I can't find you. I'm so sorry. And I'm scrolling it, very lightly so that ये ऊपर नीचे ना गड़बड़ ना करे. But you know what? I'm sorry. I can't, bring out where this lady is. Okay. I'm sorry. Yes. मुझे लगा मुझे मिल गई. Yeah, actually I just saw her, but it just it just quickly went by. Okay, Carla, I'm sorry, I cannot find your name, and I'm trying my best to scroll, but still it's it rotates and I cannot bring you on camera. So I'm continuously scrolling. Okay. Yeah. Okay. So that would be all. And well, there's one lady over here. I don't know, is this a lady? Oh, that person just went away. And there's one more. Just let me see. Amir Hayat. Okay, I'm adding Amir Hayat, and I don't know who this guy is, but let's see if I can add him on camera. And if he's added, then we can talk to him. And guess हेलो. what? Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. आप कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह शुक्र. आपके पीछे लाइट बहुत तेज है तो मुझे पीछे की लाइट्स नजर आ रही हैं. यस. Yes, so now this is better. Okay, so you were in my live session. What do you या have regarding the topic which I just discussed? I came a little bit late, just a few minutes back. I came in your session, It's but okay. you are talking about being yourself. ऐसा है कि हम लोग जो रूटीन लाइफ गुजारते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि 9 to 5
का कुछ हमारे दोस्त हैं जो लाइफ के रूटीन को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसी चीजें Mm-hmm. हैं जिनको आप लाइफ में ला सकते हैं, जैसे मतलब जैसे कि आपने मतलब सनराइजिंग है। अब सनराइजिंग एक वैसे तो तकलीफदेह अमल है सर्दियों के दौरान, लेकिन एक बहुत ही खुशगवार और बहुत ही प्लेजेंट एक फीलिंग होती है, पॉजिटिवनेस आप फील करते हैं कि आप Mm-hmm. मॉर्निंग सनराइजिंग। हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि शहरों में लोग चढ़ता सूरज नॉर्मली देखते नहीं है। ये बहुत एक इवन कि अगर आप रूरल एरियाज में हो ना तो आप देखेंगे कि उसके अंदर यू फील वेरी पॉजिटिव और इनलाइटेंड, कि आपको पता लगता रहेगा कि हाँ यार कुछ नया फील कर रहे हैं। लोगों में वैसे भी रुझान नहीं है सुबह उठने का, अर्ली मॉर्निंग का, लेकिन सनसेट का हाँ एक ऑप्शन है। आप सनसेट पे जा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान को करने से खुशी मिले। अब Mm-hmm. कुछ लोगों को म्यूजिक, अभी आप बता रही थी कि म्यूजिक पसंद होता है, वो म्यूजिक ऑन कर लेते हैं। म्यूजिक इज बेसिकली, अगर आप आर डी बर्मन को सुन रहे हैं, मदन मोहन साहब को सुन रहे हैं, तो आप उनकी इंटरेक्शन अपने माइंड में ले रहे हैं, बट इज योर सेल्फ, आप खुद से क्या है, आपको किन चीजों से करके सुकून मिलता है। कई लोगों को अकेले बैठना वैसे भी एक अजाब लगता है, उनको लगता है कि अकेले बैठना जो है वो एक तकलीफ दे अमल है, लेकिन मेरा ज्यादातर टाइम ऐसा है ट्रैवलिंग में गुजरता है। मैं वैसे अपने आप सबाहत के रेफरेंस से इट्स वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज मुझे इन्होंने लाइव सेशन में लिया है। मैं मैंने ट्रैवलिंग के दौरान ये नोट किया है कि लोग इन इस रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा ना अपने मामलात की वजह से, अपने मतलब खानगी हालात की वजह से, या अपने घर के जो मामलात हैं, ऑफिशियल मामलात हैं, उनको अपनी जात के लिए वक्त निकालना काफी मुश्किल है। आज देखिए, मैं यहाँ मैकडॉनल्ड्स आया हूँ, तकरीबन मुझे को 3 घंटे हो गए, और मैं अकेला बैठ के जो है कॉफी, पहले कॉफी ली है, then फिर अपनी जात जो चीजें अच्छी लगती हैं, किसी अच्छी डेस्टिनेशन पे जाके आप टेबल बुक करके अपना खाना खा सकते हैं, अपनी जात को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिसयूज किसी को आप अपना अपनी अपनी अपने इस वजूद को वक्त दे सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको लोगों की जरूरत पड़े, वैसे भी तजर्बात जो है आपको अकेला कर देते हैं, और आपको लगता है कि आपकी अपनी कंपनी जो है वो बहुत जो है वो आपके लिए ही ठीक है, क्योंकि आप मैं कंपेटेबल नहीं है मेंटली, और मेंटली तौर पे आप देखें कंपेटेबल नहीं करते। जो आपको पसंद है अगला शख्स शायद बोर हो रहा हो, जैसा कि अभी राइट नाउ मैं बात कर रहा हूँ और आप सब सुन रहे हैं। तो ऐसा है कि जो आप जब गैदरिंग में होते हैं, अपनी जात के लिए वक्त निकालना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। बुक रीडिंग से आप कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेशन के और कई तरीके हैं, जैसे मतलब एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लेता है, कोई अच्छी एग्जीबिशन पे चला जाता है, किसी बुक फेयर पे चले जाते हैं, पेंटिंग एग्जीबिशन को ज्वाइन करते हैं। लाहौर शहर हमारा तो वैसे ही आप जानते हैं कि इसमें तो भरमार है। लोगों को तस्कीन के लिए जो मौके फराहम है लाहौर में, शायद वो सब ज्यादा मौके अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ना मासी मासी और क्लासी तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन जिसको जो चाहिए लाहौर में मिल मिल सकता है। Okay. ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच आमिर साहब, आप जो है लाइव थैंक यू सो आए और मच, थैंक आपने यू जो है सो अपनी मच, बातें शेयर की। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेलकम। सो मच। अल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay, so this was Amir Hayat, and he gave us some suggestions regarding one needs to explore themselves, and it's the need of time as well. So you can either do it on your own, or you can either have a company with you. So, but the thing is that you always need some time for yourself. क्योंकि अगर if you are not going to get any time for yourself, so जो end result है ना, that is all going to lead to burnout, health issues, और बहुत सी चीजें हैं जो आपके साथ आकर चिमड़ जाएंगी, and you don't want that, and then you can't able to do those things which you want to do. Okay, so this was Amir Hayat. Now let me see if I can bring anyone else. If someone else would like to come online, or we can just wind up the session. Let me just check. So luckily Amir Saab aage the, and now let me just see. Okay, Yusuf, no, I can't bring you. I'm
just seeing if I can, still bring Carla. And अगर आ जाए तो well and good, और अगर नहीं आ सकती तो then I'll have to, do another session and then I'll bring her on. Yes. Okay, so I couldn't add her. I guess there must be some issue at the other end, but I can always do a separate podcast with her, and then you can, join my podcast. So that would be all for today. If you have any suggestions, if there has been any um, topic which interested you more and you can resonate your lives with that thing, you are more than welcome to, pour in your suggestions in the comment box, and I'll share my YouTube channel as well, so you people can subscribe to that as well. Okay, there's one person. Just let me check who this is, and then I can try and bring him on camera. I'm adding, and I don't know who this person is. So if he's added, then actually इतनी छोटी-छोटी जो है आपकी प्रोफाइल पिक्स होती हैं मुझे नजर ही नहीं आता. Maybe अगर मैं जो हूँ okay, it was declined. He does not want to come on camera. Anyways, that was all. Till tomorrow, I'll be back with another new topic, another useful insight, another personal experience and professional experience as well. And I'll try to bring someone on camera as well. Till tomorrow, bye bye and take care. Allah Hafiz.